Hello students, welcome all of you. In this video, we will discuss a very important topic in quantum mechanics, Dirac's Bra and Ket notation for MSc Physics Semester 1 कोर्स। इस वीडियो में हम लोग MSc फिजिक्स सेमेस्टर 1 कोर्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिराक्स ब्रा एंड केट नोटेशन को डिस्कस करेंगे, जिसे ऑल यूनिवर्सिटीज के एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 के पेपर्स में यूजुअली पूछा जाता है। नाउ डिराक्स ब्रा एंड केट notation. Dirac introduced two important notations. Bra, it is bra, which is prefactor. Angular bracket, symbol is angular bracket followed by a small vertical line, and post factor denoted by the symbol a small vertical line followed by an angular bracket. This notation is called ket, and this prefactor notation, angular bracket symbol, the symbol is the angular bracket symbol is angular bracket followed by a small vertical line. This notation is known as bra, which is a prefactor, and the another notation is a small vertical line followed by angular bracket, and this notation is called ket, which is post factor. Both notations were introduced by Dirac. These two notations, that is bra and ket, are used in the Hilbert space. डिराक ने हिल्बर्ट स्पेस में यूज किए जाने वाले दो इंपॉर्टेंट नोटेशंस को इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में जानकारी दी, जिसे प्रीफैक्टर दैट इज ब्रा नोटेशन एंड पोस्ट फैक्टर केट नोटेशन कहा जाता है। A scalar product of two state vectors or two state functions, bra psi m and ket psi m, can be written as a scalar product of two state vectors or state functions, two state vectors psi m or bra psi m, and another state vector or state function is ket psi m, can be expressed as integral psi m star psi m. Another state function is psi m. First state function is psi m. So psi m, integral psi m star psi m d top. This is the scalar product of two state vectors psi m and psi m, and this can be also written as bracket under bracket psi m comma psi n, or in bra and ket notation it can be written as bra psi m ket psi n. Say it is equation number A. In this notation, that is a scalar product of two state vectors psi m and psi n, it is bra psi m ket psi n.
In this notation, it is clear that psi m is used as prefactor, while psi n is used as पोस्ट फैक्टर। इस नोटेशन में यह क्लियर है ब्रा साई एम केट साई एन में कि साई एम स्टेट वेक्टर और स्टेट फंक्शन साई एम वह पहले आता है प्रीफैक्टर के रूप में है, एंड अनदर स्टेट वेक्टर और स्टेट फंक्शन साई एन वह बाद में आता है पोस्ट फैक्टर के रूप में प्रेजेंट है। सिंपली हम अगर साई एम लिखा जाए एंड साई एन लिखा जाए तो इससे यह पता नहीं चलता है कि प्री फैक्टर के रूप में स्टेट फंक्शन साई एम होगा और स्टेट वेक्टर साई एम होगा, और दूसरा स्टेट फंक्शन और स्टेट वेक्टर साई एन होगा प्री फैक्टर के रूप में या पोस्ट फैक्टर के रूप में। लेकिन डिराक ब्रा एंड केट नोटेशंस के यूज्ड होने के बाद यह आसानी से यहाँ पता चल रहा है कि ब्रा साई एम केट साई एन जो कि स्केलर प्रोडक्ट है टू स्टेट वेक्टर्स और टू स्टेट फंक्शन साई एम एंड साई एन का, इसमें यह स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा है कि साई एम स्टेट फंक्शन साई एम और स्टेट वेक्टर साई एम पहले आता है, दैट इज प्री फैक्टर के रूप में है, एंड दूसरा स्टेट वेक्टर और स्टेट फंक्शन साई एन बाद में आता है जो कि पोस्ट फैक्टर के रूप में। तो यह फायदा है, यह एडवांटेज है डिराक्स ब्रा एंड केट नोटेशन का। ब्रा एंड केट नोटेशंस का यह फायदा है जिससे हम यह आसानी से पता कर सकते हैं कि टू आइजन वेक्टर्स और टू आइजन फंक्शंस में कौन सा आइजन वेक्टर प्री फैक्टर है पहले आता है और कौन सा आइजन वेक्टर पोस्ट फैक्टर के रूप में। नाउ वी विल डिस्कस some properties of bra and ket notations. Write down properties of bra and ket notations. Dirac bra and ket property of Dirac bra and ket notation. So we have already discussed the importance of Dirac's bra and ket notation, that Dirac's bra and ket notations clearly distinguish whether two state vectors or two state functions are prefactor or as post factor. Now, number one property of bra and ket notation is operation on a ket vector from the left side with an operator, say A operator, which is denoted by the symbol A cap, produces another ket vector. So, operation on a ket vector from the left side with an operator A cap produce another ket vector. इसे ket vector सपोज करते हैं ket vector ket साई है, और उस ket साई पर लेफ्ट साइड से अगर ऑपरेटर A दैट इज A कैप जिसका सिंबल यूज किया जाता है, तो अगर केट साई पर किसी ऑपरेटर ए कैप लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया जाए तो रिजल्टेंट एक अनदर केट वेक्टर और केट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑपरेटर ए दैट इज विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए कैप
It is operated on a Kate function psi. This is the Kate function, that is post psi, post factor, that is post psi, vertical line followed by an angular bracket for Kate notation. So post psi. So operation of an operator a cap from left side on the Kate side, on a Kate side, it gives another Kate function, that is Kate psi dash. Suppose it is equation number 1. Similarly, operation on a bra vector from the right side with an operator, say once again a cap, a operator produces another bra vector, that is किसी ब्रा वेक्टर पर अगर राइट साइड से किसी ऑपरेटर का यूज किया जाए, सपोज किया जाए और ब्रा वेक्टर ब्रा साई है, और ब्रा साई पर अगर राइट साइड से ए वेक्टर ए कैप, एन ऑपरेटर ए साई पर, ब्रा साई पर अगर ऑपरेट किया जाता है तो अनदर वी ऑब्टेन अनदर ब्रा फंक्शन, which is psi dash, which is bra function or bra vector, which is psi dash, bra psi dash. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोगों ने यह जाना कि किसी केट वेक्टर साई केट पर अगर लेफ्ट साइड से कोई ऑपरेटर सपोज किया जाए, ए ऑपरेटर है जिसे ए कैप सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसे यहाँ भी ए कैप सिंबल का यूज किया गया है ए ऑपरेटर के लिए। तो अगर किसी केट वेक्टर और केट फंक्शन केट साई पर लेफ्ट साइड से ए ऑपरेटर ऑपरेट कराया जाता है, यूज किया जाता है, तो रिजल्ट अनदर केट फंक्शन दैट इज केट साई डैश ऑब्टेन होता है। सिमिलरली उसी प्रकार यदि किसी ब्रा वेक्टर दैट इज ब्रा साई पर राइट साइड से ऑपरेटर ए, कोई ऑपरेटर से ए ऑपरेटर यूज किया जाता है, तो रिजल्टेंट अगेन एक अनदर ब्रा वेक्टर दैट इज ब्रा साई डैश ऑब्टेन होता है। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज ब्रा साई ऑपरेटेड बाई एन ऑपरेटर ए कैप फ्रॉम द राइट। ब्रा साई पर राइट साइड से ए ऑपरेटर यूज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, तो अनदर ब्रा फंक्शन और ब्रा वेक्टर ब्रा साई डैश ऑब्टेन होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्रा एंड केट नोटेशंस। Second property is the Kates can be multiplied by complex numbers and can be added, that is Kates or Kate vectors can be added to give, that is the Kates can be multiplied by complex numbers and then they can be added to give other Kates. Suppose C1 and C2 are two complex functions which are operated on two Kate vectors, say Kate Q and Kate R. We will get C1 multiplied by Kate Q plus another complex function C2 is multiplied by another Kate function
say it is Kate S. So C1 is the first complex function which is operated on a Kate vector Kate Q, and second complex number is C2 is the second complex number which is applied on the other Kate S. We will obtain another Kate, that is Kate R. That is Kate R. तो इस प्रॉपर्टी से यह क्लियर है कि अगर डिफरेंट केट्स को अगर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर उन्हें ऐड किया जाता है तो रिजल्टेंट भी केट ऑब्टेन होता है। जैसा कि हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर C1 से मल्टीप्लाई किया गया केट Q में, एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर C2 से मल्टीप्लाई किया गया अनदर केट और केट वेक्टर S को, केट S को, तो रिजल्टेंट केट R ऑब्टेन होता है जो कि अनदर केट है। वेयर C1 एंड C2 आर complex functions. Suppose it is equation number 3 where C1 and C2 are two complex numbers. Now, a scalar product of the sum of two branch, say bra Q and bra R, that is, or bra vector Q and bra vector R, is the sum of a scalar product of bra Q and bra R with a ket S. तो अगर टू ब्रांच और टू ब्रांच वेक्टर्स, सपोज ब्रा क्यू एंड ब्रा आर को का स्केलर प्रोडक्ट अगर एक केट फंक्शन और केट वेक्टर एस से कराया जाए तो ब्रा क्यू का एस के साथ स्केलर प्रोडक्ट एंड ब्रा आर का एस के साथ स्केलर प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। दैट इज if we take the scalar product of two branch, that is bra q plus sum of two branch, that is bra q, a scalar product of the sum of two branch, that is bra q plus bra r with a ket S, with a ket S, and it gives the a scalar product of bra q with ket S plus a scalar product of bra r with ket S. That is, a scalar product of the sum of two branch, say bra q and bra r with ket S, and it is equal to the sum of the scalar product of bra q with S and bra r with S. That is sum of a scalar product of bra q with S and bra r with S. And suppose it is equation number 4, which we obtain in property number 2. Now, property number 3 is the expectation value of an operator, say A operator,
denoted by the symbol A cap, in the state psi can be written in bra and ket notation as, that is expectation value, that is expectation value of A operator, which in symbol can be represented as operator A inside the angular bracket. It is the symbol of expectation value of operator A, and it can be expressed in terms of bra and ket notations as integral psi star A cap, that is A operator psi d top, because we know that the expectation value of an operator can be expressed as integral psi star A operator psi into d top. We know very well, and it can be expressed in bra and ket notations as bra psi A cap ket psi, bra psi A cap ket psi. This is how the expectation value of an operator A cap in the state psi can be written in form of bra and ket notations. And suppose it is equation number 5, and this is property number 3. Now property number 4, if we express an operator A, that is A cap, on ket psi, that is on a ket vector eigenket or a ket vector psi, then we obtain lambda psi, where ket psi is an eigenket of the operator A cap and lambda is known as its eigenvalue. ket psi को eigenket कहा जाएगा ऑपरेटर A का, एंड लैम्डा को ऑपरेटर A का आइजन वैल्यू कहा जाता है. सो नंबर 4 इज operator A operated on ket psi equals to lambda psi, lambda into ket psi. तो किसी ket psi पर और psi फंक्शन psi पर और आइगन वेक्टर psi पर अगर ऑपरेट किया जाए कोई ऑपरेटर से ए कैप, तो इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है लैम्डा इंटू केट psi, where lambda is the eigenvalue of the operator A cap and psi ket is the eigenfunction or eigenket of the operator A cap. Now number 5, the set of eigenkets, say ket psi 1, ket psi 2, ket psi 3 and so on, ket psi m will be an orthonormal set of eigenkets, that is a set of kets psi 1, ket psi 1, ket psi 2, ket psi 3 and so on, ket psi m. These are a set of eigenkets. So the set of eigenkets, say psi 1 ket psi 1, say ket psi 1, ket psi 2, ket psi 3 and so on, and ket psi m
So the set of these eigenkets psi 1, ket psi 1, ket psi 2, ket psi 3 and so on, ket psi m will be an orthonormal set, will be an orthonormal set of, will be will be an orthonormal set of these eigenkets if the condition is if bra psi n ket psi m equals to delta nm. The condition is if bra psi n ket psi m equals to delta nm, where nm are, where n and m are equal to 1, 2, 3 and so on. N m equals to, where n comma m equals to 1, 2, 3 and so on. N and m are integers which represents a set of eigenkets psi 1, psi 2, ket psi 1, ket psi 2, ket psi 3. These numbers are used to represent these kets. N and m stand for 1, 2, 3 and so on. So the set of eigenkets psi 1, ket psi 1, ket psi 2, ket psi 3 and ket psi m will be an orthonormal set of eigenkets if bra psi n ket psi m equals to delta nm. A bra and a ket vector, a bra vector and a ket vector will be called orthogonal if their scalar product is 0. We know very well the orthogonality condition, normalization condition and orthogonal condition in quantum mechanics. We know very well that integral psi m star psi n d tau is equal to 1, it is called normalization condition, and if psi m star psi n d tau equals to 0, if m not equals to n, it is called orthogonal condition. So similarly, a bra and a ket vector will be called orthogonal if their scalar product is 0. That is, if bra psi n ket psi m, this is the scalar product of two eigenkets psi n and psi m, and if it is equal to 0, then that is, we can write if psi n bra psi n ket psi n is equal to 0, then that is the scalar product of a bra and ket vector in this case is 0, then that is the scalar product of two state functions or two state vectors psi n and psi m is equal to 0, then a bra and ket, then the bra vector, that is psi n, and ket vector psi m will be called orthogonal, because the scalar product of both bra and ket vectors psi n and psi m is equals to 0, and the condition if the scalar product of two bra vector and bra vector psi m and ket vector psi m equals to delta nm. This is the condition of orthonormality. That is, the set of eigenkets ket psi 1, ket psi 2, ket psi 3 and so on, ket psi m will be an orthonormal set of eigenkets if this condition, that is the scalar product of psi n and psi m is equal to delta nm. And
if the scalar product of psi n and psi m is equal to 0, then the bra vector psi n and the ket vector psi m will be called orthogonal. Similar to, we have already similar to the conditions of orthogonality, which is integral psi n star psi m d tau is equal to 0 if n not equal m, if n not equals to m. This is the condition of the two wave functions psi n and psi m to be orthogonal. That is integral psi n star psi m d tau is equal to 0. Then both functions psi n and psi m are said to be orthogonal. We know very well. So these are the properties of bra and ket notations which we have discussed in this video. Now this video is completed. I will try to upload more and more videos for the help of students. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes.